Hello, am I audible? Tamanna, Sanskriti, Muskan, Jyoti, Deepika, Aman. Good morning, everyone. I hope I'm audible. Yeah. So today you had class of ethics, right? Anna? And in the last week, I missed you all. Those who did not come. The last week there was a less presence of student in my class. Anyway, that's fine. Sorry. Okay. Yes. The information was the class will be offline. Anyway. और ये फेस्टिवल भी था. कौन सा फेस्टिवल 25th? क्या वेंडलिज्म करने तो नहीं पहुंच जाते? हाँ, वो वहां पर लुक एट द लोग झाल मंजीरा लेके वहां पर पहुंच जाते हैं, राइट? हनुमान चालीसा बोलने के लिए. हम्म. So, और लोग तुलसी पूजन मना रहे हैं, राइट? गुड गवर्नेंस डे तो ऑफिशियली मन रही है. एनीवे, फेस्टिवल भी था. एनीवे, सी आई डिस्कस्ड फेडरलिज्म. I don't know if you have gone through the idea of federalism or not. Today, I'll talk about the models of federalism in India, right? There are different sets of federalism, right? Now, what are they? So, look at Indian federalism is described in different words. For example, let me give you a few names. One is cooperative federalism, right? Indian federalism is described as cooperative federalism. Okay? Now, apart from cooperative federalism, Indian federalism is also basically categorized as, competitive federalism. We'll see what is difference. Competitive federalism. Okay? It is also described as, quasi-federalism. Right? Many scholars argue that India is a quasi-federal state. Now, someone talks about India is basically a case of, you know, asymmetrical model of federalism. If you discuss Indian federalism, then a different way Indian federalism has been described by the scholar. Some scholars argue it is a very much, bargain federalism. Okay. Now, some scholars argue that it is a confrontational model of federalism. Confrontational federalism.
Supreme Court focused on collaborative model of federalism, right? Now, collaborative and cooperative both are same, but let me write collaborative model of federalism. Collaborative federalism, right? So look at these are the certain categorization that how Indian federalism has been described by scholar, right? Different models of federalism. There are different sets, right? अब डिपेंड करता है कि आपका लेंस कैसा है ना? Right? It depends on now in different category scholars have focused or emphasized on different point. Now, for example, if you look at the quasi federalism in the last class we talked about, look at Indian constitution has also federal character, right? And also unitary character. It has federal character and also unitary character, and that's why Indian federalism was called as quasi model of federalism. In the last class we discussed in detail. Now today I'll focus on cooperative first. Look at cooperative federalism. इतना model of federalism और भी कह सकते हैं, right? There are different terms, right? These are the very popular models. You can see these are the popular model of federalism that is used. Right. Now let me first begin the first one, the cooperative model of federalism. Cooperative. Now the term cooperative federalism has been coined by Granville Austin. In his book Indian Constitution, the cornerstone of nation. And he argued that Indian federalism is a model of cooperative federalism. What does it mean? The center and states both cooperate, right? Both cooperate, right? For example, at the decision level, right? At the they share finances, right? They administer territory together, administration, right? So at the decision level, right? For example, let me give you example of decision making. Both take decision together, right? Through the cooperation. Let me give you example of GST Council, right? Now, if you look at the decisions in the GST Council is taken on the basis of consensus, right? Consensus means agreement between the union government and the state government, right? Now, another example I can give you, look at the interstate council. Interstate council. Have you heard about this interstate council? Ever? It is a constitutional body, and the Prime Minister is the ex officio chairperson of the interstate council, and all chief ministers, right? And of all the chief minister of all states, and chief minister of also UTs of Delhi, Pondicherry, and Jammu and Kashmir, and right, the lieutenant governor of UTs, where there is no legislative assembly. All are a member of the interstate council, and the decision in the interstate council is taken on the basis of consensus. Unilateral decision नहीं होता है. Making sense, right? It is a basis on cooperation and coordination, right? Finances की बात करते हैं, right?
look at the GST Council, right? ठीक है, जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन होता है वो बेसिकली कॉर्पोरेशन के बेसिस पे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर आप बात करोगे, लुक एट द हाउ आईएएस और आईपीएस, राइट, coordinate with the state official, both coordinate each other to administer the territory, right? Now similarly, if you look at the centrally sponsored scheme, right? Now look at the centrally sponsored scheme, right? Both the center and the state basically cooperate. Look at the funding. The 60% funding given by the center and the 40% share is actually given by the states, right? So look at the this model. This the relationship between the center and the state was called as in terms of cooperation, the cooperative. Making sense? Right? Now look at Niti Ayog, right? Niti Ayog basically also was established in 2015. 2015, 14 नहीं, 14 में तो सरकार ही आई थी मई में, ठीक है, और 15 जनवरी में इसका सेटअप हो गया था, राइट? It replaced planning commission. Now planning commission was highly centralized body. However, Niti Ayog is not a centralized body, right? Its motive is to work as a team India. Its motive is to work, team India, right? So what is team? When we call team, a team of football or cricket, now it requires collaboration, right? Coordination, right? Cooperation of each player in order to win the game, right? So Niti Ayog promotes cooperative federalism, right? Let me give you another example of cooperative federalism. Have you heard about zonal council? आपने सुना है zonal council के बारे में? नहीं सुना है, right? Now zonal मतलब, right? Basically, if you look at zonal council is a statutory body. I'll discuss again it later in details, right? I'll discuss GST council in detail. I'll talk about interstate council in detail. Zonal council is a statutory body established under the reorganization of State Act, State Reorganization Act 1956. ये कब से बना है? आपको देखेंगे कि हमारा जोनल काउंसिल 4 जोनल काउंसिल है। नॉर्थ जोनल काउंसिल, उसके बाद साउदर्न जोनल काउंसिल, राइट? साउथ के जो स्टेट्स है वो साउदर्न जोनल काउंसिल के मेंबर है, नॉर्थ के जो स्टेट है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के मेंबर है। सिमिलरली वी हैव ईस्टर्न जोनल काउंसिल, राइट? ईस्टर्न के जो स्टेट्स है वो ईस्टर्न में है, राइट? यू हैव वेस्टर्न जोनल काउंसिल, जो वेस्टर्न के स्टेट्स हैं वेस्टर्न, राइट? यू हैव सेंट्रल जोनल काउंसिल, राइट? जो सेंटर के स्टेट्स हैं वो सेंटर में है, एंड देन यू हैव नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न काउंसिल, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यहाँ पर जोनल वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 लेटर ऑन। नाउ जोनल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट, सो दैट द स्टेट्स, राइट, ऑफ दैट जोन can cooperate and coordinate to mitigate the common problems, right? Can resolve the common issues, right? Let me give you an example. If you look at the northern eastern states, वहां पर गैंग का बड़ा प्रॉब्लम है। गैंग्स, राइट? वो गैंग मूव करता है यहां से वहां बेसिकली, and then police has cooperation among themselves to arrest that, to basically curb on the gangs, right? ठीक है? Similarly, if you look at the states of Rajasthan, Haryana,
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्राइम का बड़ा ये है, नेटवर्क है पूरा अक्रॉस द स्टेट्स, राइट? तो ये कॉमन इश्यूज है, राइट? सो जोनल काउंसिल, दिस जोनल काउंसिल बेसिकली is to cooperate and coordinate among the states in the particular zone so that common issues can be resolved. So zonal council is also example of the cooperative federalism. Making sense, right? ठीक है? Now Prime Minister often talks about cooperative federalism, right? In आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बार बार बात करते हैं कि हम cooperative federalism, we are working like team India, right? We are, basically trying to develop all along, right? ठीक है? That is the idea of cooperative federalism. Making sense about cooperative federalism, right? समझ में आया? Now it's turn to write it. Now it's a turn to write it. अब थोड़ा सा 2-4 लाइन में लिखिए इसको. Cooperative federalism implies a joint collaboration. Cooperative federalism implies a joint collaboration between the central states, to cooperate in different areas. जैसे मैंने बताया वैसे ही, हाँ, मतलब इसमें कुछ अंतर नहीं करना, लेकिन लाइक डिसीजन मेकिंग, कॉमा फाइनेंसेस, कॉमा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, and so on. इतना बहुत है, and so on. ठीक है? Now change the point. देखिए, Granville Austin described Indian federalism. Granville Austin described Indian federalism as cooperative federalism. Granville Austin described Indian federalism as cooperative federalism because both the central states, both the center and the states cooperate and coordinate to achieve common goal. ठीक है? अब लिखिए कॉमन डिसीजन मेकिंग, कुछ लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए कॉमन डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर जीएसटी काउंसिल को हम फाइनेंस में लाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीएसटी काउंसिल के बदले जोनल काउंसिल ले आते हैं. हाँ, या दूसरा और कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं. यूजीसी पता, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है.
जितना भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों के लोग हैं, वहां पर दोनों को कंबाइनली रूप से वो काम करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, राइट। जोनल काउंसिल, हाँ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कह सकते हैं, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट आल्सो टेक्स अ कलेक्टिव डिसीजंस, बट पार्लियामेंट आप जब राज्यसभा कहेंगे तो राज्यसभा इज अ यू नो सो पार्लियामेंट कह सकते हैं वेयर राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ कोऑपरेट, एग्जैक्टली, वेयर बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ कोऑपरेट्स, राइट, ठीक है। सो जोनल काउंसिल है, फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं किसका, बताया यूजीसी का, यूजीसी, दिस आर द एग्जांपल, लिखिए इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, यूजीसी and others, in which the center and state the interstate council, zonal council, UGC, in which center and state take decision on the basis of consensus, on the basis of consensus. पॉइंट चेंज कर लीजिए, लिखिए कोऑपरेशन इन फाइनेंस, कोऑपरेशन इन फाइनेंस, जीएसटी काउंसिल, GST council is an example in which decisions are taken on the basis of consensus. On the basis of consensus, मतलब दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को. Now write cooperation in administration. Next point दे दीजिए cooperation in administration. Cooperation in administration. देखिए IAS and IPS cooperate with state officers and vice versa. IAS and IPS cooperates with state officers and vice versa in order to administer territory. In order to administer territory. देखिए cooperation in development. Cooperation in development. समझ में आ रहा है ना, ये किसका कॉपरेशन है, सेंट्रल स्टेट दोनों का, राइट. कॉपरेशन इन डेवलपमेंट, अलग अलग पॉइंट बना के बता कर सकते. लिखिए सेंटर एंड स्टेट बोथ कोऑपरेट इन ऑर्डर टू centrally sponsored scheme. Center state both cooperate in order to implement centrally sponsored scheme. They also share funds. They also share fund. अच्छा अभी नया नया स्कीम आया है, बहुत सारे स्कीम आए हैं. Have you मतलब paid attention towards the recent session, the winter session of the parliament?
नॉट येट. हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली. राम जी. विकसित भारत, जी राम जी. Right? That scheme, if you look at, right, is an example of cooperative federalism. ठीक है. अच्छा, इंडियन फेडरलिज्म को बड़ा इंटरेस्टिंगली आप कोई 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 रोज क्वेश्चन रेज कर सकता है. प्रियांश आया नहीं क्या आज? है. अब तो बोला नहीं सर ये कोऑपरेटिव है या कोअर्सिव है. इंडियन फेडरलिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज कोअर्सिव फेडरलिज्म. राइट. द सेंटर कोअर्स द स्टेट टू डू इट. लेट मी टेल यू. Right, so the model of federalism है. There are 52 sets of Indian federalism. Let me tell you, 52 sets of Indian federalism. उतना से आपने लेना देना नहीं है, तो हमें जरूरत नहीं है. Right? Indian federalism is also called coercive federalism. Coercive मतलब फोर्स के थ्रू काम करा रहे हैं आप. Right? Anyway, so there is a basically what cooperation in development. Right? क्या लिखा आप थोड़ा बताना लास्ट में. फंड्स लेके. फॉर एग्जांपल थोड़ा कुछ एग्जांपल लिखे ऐसे स्कीम का. फॉर एग्जांपल वीबी जीराम जी, विकसित भारत जी. अब इसका फुल फॉर्म मुझसे मत पूछना, मैं भूल जाता हूं. इसका ना, इसका ग्रामीण है, रोजगार है, और इसका नॉट अंत्योदय है, आजीविका. राइट. समथिंग एम से मिशन है या मैं भूल जाता हूं. दैट्स माय प्रॉब्लम, बट यू रिमेंबर इट. वीवी राम जी चलेगा. राइट. वीवी जी राम जी, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना. मेनी स्कीम्स यू कैन पुट. एक स्कीम है साथी स्कीम. नोट्स मिला है आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं मिला है. नहीं. साथी स्कीम. So look at, there are many schemes, right? Right? And both the central state are working like Team India for socio-economic development. That is a cooperative federalism. Did you get the idea what is cooperative federalism? समझ में आया? Right? Now look at, इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए यहीं पर बता देता हूं. In 2018, the Supreme Court has coined a term called collaborative federalism. It is the collaborative federalism is a term coined by the Supreme Court in 2018. Now, why Supreme Court coined this term? Now, Supreme Court coined term in context of the confrontation between Delhi, right, ruled by Aam Aadmi Party, and the BJP, which rules the center. And you know, Aam Aadmi Party Chief Minister Kejriwal, right, and the BJP, both were in confrontation, right? Central government basically appoints lieutenant governor Delhi के केस में, and there are several ordinances came up from the central government to restrict the power of the elected assembly headed by Kejriwal, right? Aam Aadmi Party. So there was a lot of struggle between the Aam Aadmi Party and the BJP ruling at the center. So Supreme Court's, directed them, advised them, right? Let's, be ready to collaborate each other, right? To achieve the common mission. What is the common mission for you? What is the, objective of the government? The objective of the government is basically, to provide good life to the people. To good life to the people. Right? Serve the society. तो ठीक है, कोई बोलेगा ऐसे serve करो, कोई बोलेगा ऐसे serve करो. Now look at what is the basic objective of living on this earth. How we can make this earth livable and better. Now until we don't understand how to live a good life, ऐसे रहने से good life नहीं आ जाती. ठीक है? Now if you look at 21st century, we all are living in a different world, right? Economy does matter. हर चीज में इकोनॉमी फैक्टर आ जाता है, प्राइमरी आ जाता है, जो कि आना नहीं चाहिए. और यही होता है कि लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बड़ा है. लोग
if you see in the 21st century, look at the material achievement. People have achieved it in an unprecedented way. लोगों के पास मोबाइल है, लोगों के पास देखो कितने अच्छे अच्छे जैकेट्स हैं आज. कैन यू थिंक कि 30 years पहले इतने अच्छे जैकेट हुए रहेंगे? नहीं थे भाई. मैं कॉमन मासेस की बात कर रहा हूँ. इलीट के पास तो सब कुछ हमेशा सब कुछ रहता है, राइट? बट उसके बावजूद इफ यू लुक एट, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए अच्छा क्या है. हाउ वी कैन बी सेटिस्फाइड बाय आवर ओन सेल्फ. हैप्पीनेस वही दे सकता है आपको, मनी कभी हैप्पीनेस नहीं दे सकता. कोई अचीवमेंट, कोई बड़े ऑफिसर बनेंगे तो भी हैप्पीनेस नहीं दे सकता. वहां पर अलग सी प्रॉब्लम है. आपको क्या लगता है कि जो ऑफिसर बनने के बाद, आईएएस और आईपीएस बनने के बाद आप खुश रहोगे? जिंदगी में बहुत सारी तबाही आ जाएगी वहां पर, और जितना काम अभी करना पड़ रहा है उसे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. और अभी आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे. दुश्मन मतलब जो परसिव्ड एनिमी, मे नॉट बी दुश्मन, परसिव्ड एनिमी वहां पर और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? एनीवे, आई थिंक राइट, मैंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समझा दिया. किसी को नहीं समझ में आया, यू गो अहेड, आई विल गिव एक्सप्लेनेशन. अगर समझ में आ गया, देन आई विल मूव टू द another model of federalism that is called competitive federalism. Should I move ahead? Let's go. अच्छा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से क्या दिमाग में आ रहा है कि कंपटीशन है बेसिकली. किसके किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट के बीच में. बट ऐसा नहीं है. केवल ऐसा नहीं, ऐसा है बट केवल ऐसा नहीं है. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जब आप देखेंगे तो इट हैज इवॉल्व इन इंडिया. अब 1950 से लेकर के 1990 तक अलग सा कंपटीशन था, राइट? और आप देखेंगे कि 1950 के अर्ली दशक में there was a rivalry between the state and center. There was a rivalry between state and center, right? अब किस तरह की rivalry थी? Center wanted its own dominance, the state wanted its own autonomy, right? For example, let me give you, you know, the southern states, right, fought for the autonomy, right? Like for example, anti-Hindi movement in the early decade 1960s, right? Even they had, they were demanding Dravidistan, in 1960s 50s. But after 1962 India-China war, they basically abolished the demand. Now then they started talking about the state autonomy, and they established, Raja Mannar Committee. Raja Mannar Committee was appointed by Tamil Nadu government in order to review the central-state relation. And the Raja Mannar Committee, right, talked about abolition of IAS or IPS, all India services basically. It also talked about abolition of, Article 356. What is Article 356? The president. State emergency. Yes, the president rule, the governor rule. Right? It talked about more autonomy to the, to the states. Okay? Then if you look at the Bengal government also passed a memorandum, right? And it talked about, the more autonomy for state. However, the center, did not listen these voices. Let me tell you. Right? Because if you look at, as I told you that Indian constitution was framed, right, in a very centralized tendency, in a very centralized manner, right? Okay? So
वेस्ट बंगाल ने भी बनाया. उसके बाद आप देखेंगे पंजाब. The Punjab also passed a resolution in 1970, right, which talked about autonomy, right? So this is an official document, let me tell you. On the other hand, other states also wanted more autonomy. So basically, it was a competition between the center state, right? The center wanted dominance. The center wanted the status quo. The center started, wanted a status quo. Status quo मतलब जैसा चल रहा है वैसा. Even sometimes center, implemented policies or even applied rules without the consent of the state. Without the consent of the state. Now, what state wanted? State wanted change. इस टर्म में बताता हूँ. स्टेटस को मतलब मेंटेन कंटिन्यूटी, राइट. और चेंज मतलब बदलाव, ऑटोनॉमी, राइट. यहाँ सेंटर वांटेड डोमिनेंस. State wanted autonomy. So scholars argue that this was a competition between center and state. Making sense about a one type of competition, right? Now, second layer of competition you can find from 1990 to 2000. Right? There's another competition, and again competition here between not the center state only. Here the competition was among the states. Here competition was between center state. यहाँ पर है competition among the states. Right? और competition among the states किस चीज के लिए है? Right? To attract FDI, forest direct investment, to attract MNCs. Right? Competition among the state, to attract market. Right? Market मतलब market बहुत बड़ा एक सिंपल टर्म है. मार्केट का बहुत बड़ा it's a very broader term, right? यहाँ मार्केट मतलब है FDI. ठीक है. They make their industrial policy very attractive. Each state has their own industrial policy, right? So उन्होंने बनाया, and if you look at the states, the southern states particularly, become very successful in attracting investment in their own state, right? In northern, some states like Rajasthan, not Rajasthan, basically Gujarat, Punjab, Haryana, they also attracted investment, right? So entire FDI, if you look at 72%, investment took place in states like, Haryana, right? Delhi, go down to the Gujarat, right? Maharashtra, Gujarat, Karnataka, then Tamil Nadu. ये है जिसको ब्लू कॉरिडोर बोलते हैं. इसको बोलते हैं ब्लू कॉरिडोर. Have you heard about blue corridor? That is called as industrial corridor of India. नहीं सुना अब तक? Economy. Now, on the other hand, the states who were economically backward, right, were not able to attract FDI, like Bihar, Odisha, right, then Madhya Pradesh, right, Chhattisgarh, Jharkhand, in that way. और वहां पर क्या है? You can see the rise of the red corridor. What is red corridor? The Maoist movement. They attracted approximately 32% 30% around, right? And they actually red corridor become very much active in those areas because of the poverty, right? So there was a competition among states. Now the third competition, अगर आपको कहीं पर और जो जगह मिलेगा तो फिर यही मिलेगा, जो कि ये नया है.
14 to 2025. Now, if you look at Niti Ayog, right, has right 2015 लेना चाहिए मुझे 14 ना 15 क्योंकि ये establishment हुआ है 15 में. Niti Ayog has promoted a positive competition among states, right, to achieve, the social and economic development, right? Now look at, this is the same year where you have sustainable development goal, right? Sustainable development goal, who framed the sustainable development goal? UN, yes, the specialized agency of the UN, okay? And it appealed the member country to achieve it. Right. So look at the Niti Ayog has promoted competition, a positive competition among the states to achieve socio-economic goal. Right. So Niti Ayog has started a competition and ranking the states like ease of doing business index or quality in schooling index, है ना, स्वच्छ भारत index, right? समझ में आ रहा है? Right. So this is a competitive federalism, right, that came up in 2025 and onwards. What idea? So look at the within the competitive federalism, there are three sets. One competition between the central state, right? No, right. Sometimes this competition is still going on, but this competition is not remain competition. It has turned into the confrontational model of federalism. I'll discuss it a bit later. ये जो कंपटीशन है ना अब कन्फ्रंटेशन मोड में चला गया है. For example, let me give you example. The central government, sent CBI to arrest some officer in West Bengal. जब वहां पर गए तो वेस्ट बंगाल पुलिस ने सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया. Look at the confrontation, right? Let me give you another example. 2020 March, when national lockdown has been implemented by the center, I know, अब मुझे लगता है कि आपको पता होगा ना लॉकडाउन, राइट? बहुत जलेबी और समोसा खाए होंगे अपने घर पे बना बना के, लोग तो वही डाल रहे थे, राइट? Yes. Now look at the Kerala Assembly passed a resolution against the national lockdown. Kerala Assembly passed a resolution against lockdown. So this competition turned into confrontation. I'll talk about confrontation model a bit later, right? Now here, if you look at the competition, right? So competitive federalism implies a competition between central states or among the states. Now this competitive federalism, right, has actually taken three sets, right? Or it has three sets or three dimensions. In one dimension, we can see the state and center both are in rivalry position, right? Center wants to maintain their status quo, right? Their dominance, right? On the other hand, the state wants more autonomy. The state wants more autonomy. Now another we can see that, और ये अभी भी चल रहा है ये सब. ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, ये आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है. सब कुछ चल रहा है पैरेलली, ओवरलैपिंग होता रहता है ना जिंदगी में, सब कुछ चलता रहता है, राइट? सो ये सब ओवरलैपिंग है, चल रहा है. Now let me tell you the term competitive federalism itself created by Niti Ayog in 2015, and it talked about we are trying to promote competition among the state to do the well. The Indian government, the official position of the Indian government is cooperative and competitive federalism. आप आज क्या करना, नीति आयोग पे गूगल करना और देखना नीति आयोग ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग फेडरलिज्म, तो आपके मिल जाएगा कि ये कंपटीशन वो बढ़ा रहे. ठीक है? It is not
See, basic structure you cannot damage it, but you cannot strengthen it. बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब नहीं कि आप टच नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप डैमेज नहीं कर सकते, राइट? The center cannot damage the federal structure of the country, but it is not mean that the central government cannot strengthen the federal structure. समझ में आ रहा? जो बेसिक स्ट्रक्चर कहने का जब जुडिशरी ने लाया था तो उसका मतलब ये था कि वो जो बेसिक चीजें हैं वो मेंटेन रहे, राइट? अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है जिससे वो स्ट्रक्चर और हेल्दी होता है, there is nothing wrong in it. There is nothing wrong in it. But the idea? Yes. Making sense? Now you have to note down. केवल पिक्चर बनाने से नहीं होगा, थोड़ा लिखिए, लिखिए 3-3 लाइन, 2-2-3 लाइन सबके बारे में. अच्छा, इस चैप्टर में मैं पहले बता दूं, आई होप कि आप लोग लक्ष्मीकांत को भी पढ़ रहे हैं. वहां पर राजा मन्नार कमेटी है, वहां पर आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन है जो पंजाब का भी मैंने डिस्कस किया, वहां पर वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है, ठीक है? वहां पर रंजीत सिंह सरकारिया कमीशन का भी रिपोर्ट है, वहां पर एमएम पुंछी भी है, राइट? तो ये जो सब मैंने बताया उसको वहां आप थोड़ा देखेंगे, बैठ के देखेंगे, ठीक है? थोड़ा जिस दिन बर्डन मिले तो बर्डन लेना चाहिए, नहीं मिले तो सर बहुत बढ़िया है, हाँ ऐसा ऐसा नहीं चलते रहते, कभी ज्यादा बर्डन होता है कभी कम होता है. अभी तक मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा 3-4 कमीशन एंड कमिटी है, उसको आप ढंग से पढ़ेंगे उसको, राइट? स्पेशली सरकारिया कमीशन को जरूर पढ़ेंगे. व्हाट आइडिया? सो आपको ऑब्जेक्टिव बनने में वो हेल्प करेगा, ठीक है? सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स. लिखिए जरा से, देखिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म implies competition between the central state, competition between central state or among states for a specific region, for a specific region. It has three dimensions. It has three dimensions. First लिखिएगा, competition between central states in early decades. Competition between central states in early decades. Competition between central state in early decades. In the post-independent India, the union government and the states, faced rivalry. It was common in the US also and Canada also. It was common in the US and Canada also.
ठीक है. Next point, the center maintained a status quo. The center maintained a status quo. Status quo मतलब क्या होता है? As it is, right? You continue with the as it is. The center maintained the status quo in its dominance. In its dominance, on the other hand, on the other hand, state demanded autonomy. On the other hand, state demanded autonomy. Change the point. Tamil Nadu government appointed Raja Mannar committee. Tamil Nadu government appointed Raja Mannar committee. Raja Mannar committee, comma, Bengal, Raja Mannar. Raja Mannar, yeah. Raja Mannar. Raja Mannar committee. West Bengal passed memorandum. The West Bengal government passed memorandum, and Punjab government passed Anandpur Sahib resolution. And Punjab government passed Anandpur Sahib resolution. Anandpur Sahib resolution in order to demand more autonomy. In order to demand more autonomy. और ये झगड़ा जो है चेंज का और स्टेटस को का आज भी है. ये जो दोनों का कंपटीशन है, सेंटर चाहती है कि हम डोमिनेंस मेंटेन रखें, स्टेट चाहता है ऑटोनॉमी दे, और ये आपको अभी भी मिलेगा, राइट? कभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिटवीन तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको पोजीशन दिख जाएगा कभी कभी, राइट? क्या लिखा? इन ऑर्डर टू चेंज द पॉइंट, लिखिए द क्वेश्चन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन. The question on center-state relation, the question on center-state relation was finally fixed by. The question on center-state relation was finally fixed by. The question on center-state relation was finally fixed by R.S. Sarkaria Commission. R.S. Sarkaria Commission. In 1988, कहीं पे टाइम इधर उधर होगा देख ले. In 1988, which favors the center. Which favors the center. Which favors the center. Okay. However, it recommended. However, it recommended. However, it recommended to respect the state. Right? Now, one more point you write. Next point, like in SR Bommai case, Supreme Court held that. In SR Bommai case, Supreme Court held that. In SR Bommai case, Supreme Court held that federalism is a basic structure of the Indian Constitution.
Federalism is the basic structure of the Indian Constitution. यहां पर आकर के मामला सेटल हो गया थोड़ा सा इनके कंपटीशन. Otherwise, if you look at during 1950 to 1990, many times Article 356 had been used. आपको पता है Article 356 had been used approximately 125 times in India. 125 times. 125 बार से ज्यादा. कश्मीर में लगा 126वां बार है. कश्मीर नहीं, मणिपुर में भी लगा है ना, राइट. 126वां या 127वां बार है. आपको पता है 126-27 में से आधा किसने इंप्लीमेंट करा? इंदिरा गांधी ने, राइट. इंदिरा गांधी डिड नॉट रिस्पेक्ट द स्टेट. ठीक है. सो बेसिकली एंड स्टेट वांटेड ऑटोनॉमी. समझ में आ रहा है द पहला राइवलरी. और सरकारी कमीशन ने क्या कहा कि भाई आप स्टेट को रिस्पेक्ट करो. फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू व्हाट रिकमेंडेशन मेंटेन कर. यहाँ पर रिकमेंडेशन लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर समझना जरूरी है. सरकारी कमीशन ने कहा कि जब भी आप गवर्नर को अपॉइंट करो ना, गवर्नर शुड बी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट. फॉर एग्जांपल बिहार का गवर्नर कौन होगा? जो बिहार का नहीं होगा. तमिलनाडु का गवर्नर कौन होगा? तमिलनाडु का जो नहीं होगा. Right. Secondly, when the president appoints the governor, it asks the view of, or it basically asks the chief minister. एक बार पूछ लो कि हम इसको कर रहे हैं, राइट. ये रिकमेंडेशन था. दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई, you should impose Article 356. 356 मतलब the president rule in the rarest of the rare case. क्या मतलब है? राइट. ऑन द लास्ट रिसोर्ट, जब कुछ भी ना बचे तब आप प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करें. राइट. ये किसको मिल रहा है हिदायत? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हिदायत मिल रहा है. राइट. ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट द सरकारिया कमीशन हैड टेकन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्होंने बोला सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही चलेगा, सब बढ़िया है, केवल तुम ये सब काम मत करना. क्या? जैसे गवर्नर को उसी वहीं से मत लेना, गवर्नर शुड बी फ्रॉम द आउटसाइड. और दिस ऑल वर रिकमेंडेशन. द सरकारिया कमीशन हैड गिवन approximately 247 recommendation and approximately 188-189 recommendation had been accepted by the government. Got the idea? तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा फाइनलाइज हो गया, राइट. बट स्टिल दैट कंपटीशन इज गोइंग ऑन, राइट. कोर्स इट इज, राइट. अच्छा, गवर्नर जब खुद के स्टेट का होगा तो क्या होगा? It would be very easy for the governor to mobilize their MLAs in their own favor. नहीं, राइट. तो चीफ मिनिस्टर होके क्या कर लोगे? तो भाई सेंटर, तुमको चीफ मिनिस्टर बनवा दूंगा मैं, तुम मेरे साथ में आ जाओ, राइट. सो व्हाट हैपेंड? द सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट the governor should be from the outside state and governor should not engage into the local politics. Okay? Later on, if you look at Supreme Court has actually उन्होंने थोड़ा पकड़ा कि भाई आप गवर्नर को ऐसे नहीं हटा सकते. दूसरी बात, गवर्नर इज a constitutional position. तीसरी बात, you cannot dismantle the elected legislative assembly of the state. Right? That was a BP single judgment, जो कि हम लोग बीबी सिंगल जजमेंट को कब हम लोग कोट करेंगे? हम कोट करेंगे जब हम गवर्नर पर आएंगे, राइट. वो कहता है कि अगर if the central government dissolved the state assembly and later on it was found that it was done under the malified intention, then the Supreme Court can restore the government. Let me tell you, it was a biggest, setback to the central government. कि भाई आप, you cannot impose state emergency, that is Article 356, without proper reason. You have to, right? ठीक है? Making sense? Anyway, now write the second one. देखिए, competition among states in the post LPG era, ऐसे लिखिएगा.
ये एलपीजी की ही बात हो रही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Competition among states in the post LPG era. Competition among states in the post LPG era. In the post LPG, I hope you know LPG, हाँ? क्या होता मतलब? Liquefied petroleum gas. यही होता है ना? Liberalization, Liberalization, privatization. privatization and globalization. Yes, yes. Liberalization, privatization and globalization. अब पता है कि नहीं, मैं बताऊं इसको LPG. You know basics ना? Right? Indian market has been liberalized in 1990. Right? Market open हो गया था. Right? आज जो हम गाड़ियां देख रहे हैं रोड पर, ये 1990 का कमाल है. आज हमारे पास जो जूते हैं, बाइक्स है या मोबाइल्स है, ये सब 1990 का कमाल है. मनमोहन सिंह से ज्यादा आप उनको क्रेडिट दें, पीवी नरसिम्हा राव को, फॉरगेटन प्राइम मिनिस्टर. राइट? हमें नहीं भूलना चाहिए, नरसिम्हा राव डिड अ ग्रेट टू दिस कंट्री. राइट? लोग साइडलाइन कर देते हैं बिकॉज नरसिम्हा राव, यू नो, does not belongs to the Gandhian family. Anyway, so LPG, I hope you know. Like in the post LPG era, in the post LPG era, the state becomes competitive to attract new investment. The state became competitive to attract new investment from foreign companies. From foreign companies. They framed their industrial policy. They framed their industrial policy very conducive. They framed their industrial policy very conducive to attract MNCs. To attract MNCs. Now change the point, like states like Haryana, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu have attracted most of the investment. States like Haryana, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu have attracted most of the investment. Bracket में लिख देंगे around approximately 70%. Bracket close. Whereas states like Bihar, Rajasthan, MP, UP, whereas states like Bihar, Rajasthan, MP, UP, Assam, and Odisha. Assam and Odisha have attracted approximately 30% or less investment. Bracket approximately 30%. Bracket close. Done? Okay, this led to developmental disparities. This led to developmental disparities
This led to developmental disparities between the blue corridor ब्लू कॉरिडोर को समझने के लिए ब्रैकेट देखना, देखिए ब्रैकेट लिखना, ब्रैकेट देखिए बिगिनिंग विद दिल्ली गुड़गांव, beginning with Delhi Gurgaon and passing through beginning with Delhi Gurgaon and passing through Bombay, Surat, Hyderabad and Bangalore. Bombay, Surat, Bangalore and Chennai. Chennai भी लिखना and Chennai. Bracket close. Right? So it created disparities between blue corridor and red corridor. Bracket close के बाद and red corridor. And red corridor. अच्छा रेड कॉरिडोर एरिया में कौन आता है, ब्रैकेट में लिखिएगा नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स, नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स, ब्रैकेट क्लोज, नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स. Got the idea? So this was one competition, right? Now second you write, third you write, देखिए competitive federalism promoted by Niti Aayog. Third point, competitive federalism promoted by Niti Aayog. Competitive federalism promoted by Niti Aayog. Right, in 2015, Niti Aayog promoted a positive competition among states. In 2015, Niti Aayog promoted a positive competition among the states in order to achieve socio-economic developmental goals. Next point, Niti Aayog started ranking states for their achievement. Niti Aayog started ranking states for their achievements. For example, School Education Quality Index, State Health Index, Water Management Index, Sustainable Development Goal Index, Ease of Doing Business Index, India Innovation Index, and Export Competitiveness Index.
export export import वाला export competitive index. Now next point, Niti Aayog acted as Niti Aayog acted as captain of Team India, captain of Team India. Niti Aayog acted as captain of Team India, which has similar goal, which has similar goal, which has similar goal, right? So that is basically competitive model of federalism. Now, if you look at in the recent decade, the cooperative federalism and competitive federalism moved to confrontational model of federalism. Confrontational model of ये जो कंपटीशन था कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो गया है, राइट? अब ये क्यों हुआ है आप देखेंगे कि आप 1950 से 1990 तक, राइट, अगर आप पार्टी सिस्टम को थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छा रहेगा समझने में, राइट? या इंडियन पार्टी सिस्टम तो आप देखेंगे कि 1950 से लेके 1900 till 1967 if you look at there was one party dominance, राइट? ये 12वीं की बात कर रहा हूं मैं, मत समझना कि मैंने कुछ ऐसा हाई फाई पढ़ के आया आपको पढ़ाने के लिए, जरूरत नहीं है पढ़ाने को आपको, मतलब उतना हाई पर बात ही नहीं करना है, राइट? 12th का है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब पॉलिटिक्स का, उसको पढ़ लीजिएगा, 3rd चैप्टर है, राइट? ये क्या कहता है कि भाई यहां पर क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस थी, वन पार्टी डोमिनेंस थी, राइट? जो कि मैं जब पॉलिटिकल पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा आपको, ये चर्चा करूंगा कि यहां पर कौन कौन डोमिनेंस कर रहा था, कांग्रेस was dominant at the center and Congress was dominant also in states. अच्छा, 1967 की बात है when Congress basically lost power in 9 states. Congress lost power in 9 states. ठीक है? Now in many states a single party came to power, like Tamil Nadu, DMK. But states like UP and Bihar, here you have coalition, or Bengal you had coalition at the state level, right? So here if you look at the center maintained their dominance, जो मैं बात कर रहा था आपको, right? State जब ये जो बात है ना 1967 के बाद ये आप देखेंगे कि ये जो कंपटीशन है वो इवॉल्व होता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है रूल्ड बाय द डिफरेंट पार्टी डिमांड्स मोर ऑटोनॉमी. सो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो डिमांड किया है ये अकाली दल ने डिमांड किया था, पंजाब रूल कर रहा था 1971 में. ये जो मेमोरेंडम की बात कर रहा हूं मैं, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, इसको लेफ्ट पार्टी ने किया था. राजा मन्नर कमेटी के जो में बात किया 1960, ये 1969 की बात है जब डीएमके ने डिमांड किया था. इसके बाद आप देखेंगे, राइट, यहां पर कहते हैं कि इसको कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस एट द सेंटर, बट कोलिजन इन स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में कोलिजन आ गए, राइट? ओपीडी रहा सेंटर पे, ओपीडी मतलब वन पार्टी डोमिनेंस, राइट? तीसरी बात अगर देखेंगे कि यू हैड कोलिजन एट द सेंटर, यहां पर फेडरलिज्म सबसे ज्यादा मजबूत होता है, बिकॉज द पार्टी विच रूल्ड इन स्टेट्स हैड शेयर एट द सेंटर. फॉर एग्जांपल लुक एट द डीएमके. DMK was ruling Tamil Nadu
but DMK or AIDMK, whosoever ruling, you know, Tamil Nadu, had also sharing power at the center. बिहार में भी यही हाल है हर स्टेट का. तो यहां पर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा फेडरलिज्म हुआ. अब ये बात कब से कब तक चला? 1989 से लेकर के आप देखेंगे 2014 तक. 2014 में पहली बार हुआ है कि यू सी दैट देयर इज अगेन OPD, and this time it is a different OPD, right? हाँ, OPD प्रॉब्लम हो तो कुछ दिखाने चले जाना, right? The one party dominance, and this time BJP came to power, and it was after 30 years when a single party got majority in Indian parliament, right? 1984 के बाद Congress had full majority in the parliament in 1984. यहां पर क्या हुआ कि right in if you look at 2014 the BJP had majority, however it maintained the coalition dharma, right? इसने किसी पार्टी को बोला नहीं मत जाओ मत जाओ, वो काम आया अभी, राइट? ठीक है. तो आप देखेंगे यहां पर जो भी नॉन बीजेपी रूल्स स्टेट है ना, राइट, उनको इन्होंने टेम करना शुरू किया. सो नॉन बीजेपी रूल्स स्टेट, बीजेपी ruled states started confronting with the BJP led coalition government at the center, right? And this confrontation can be seen in a different ways, right? This confrontation can be seen in a different ways. There are different examples, right? The two examples I had given to you, that look, when the BJP government sent CBI, which is central body, to arrest officer in Bengal. Now what happened? The reverse. The CBI had been arrested by the Bengal police, right? When the central government, implemented national lockdown, the Kerala government basically passed a resolution against the national lockdown and against the national lockdown. Right? Now, if you look at the BJP, the central government has also confronted with Delhi, and it passed two law that is called NCTD Act 2021. अच्छा, फुल फॉर्म क्या है NCTD का? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट. अच्छा, ये 2021 में बनाया, और इसमें क्या कहा पता है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर. भाई चीफ मिनिस्टर का क्या काम? हटा दो ना, क्या जरूरत है? Now this law said, Delhi government means लेफ्टिनेंट गवर्नर. आपको याद है अर्ली दिन में ये केजरीवाल सो जाता था, रोड पे ही प्रोटेस्ट करने लगता था, राइट, गवर्नमेंट के खिलाफ. बिकॉज इफ यू लुक एट दिस पार्टी BJP came to power in 2014 and Aam Aadmi Party came power with full majority in 2015. दोनों के दिमाग में ये था कि जनता मेरे साथ है. But the idea, right? So both started confronting. Since the national government, the central government has more power, now it passed law. It has passed ordinance, it has made law. For example, NCTD Act 2021. Again, there was another law, NCTD Act 2023. यहां पर क्या किया? दिल्ली गवर्नमेंट के पावर ही खत्म कर दी. It seized Delhi government's power to transfer their own officer. कुछ नहीं कर सकते दिल्ली गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के सिवा, right? So you can see the confrontation between the central state. What idea? Dictation will follow tomorrow, or can we discuss fundamental rights का जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस कर ले कल, right?
मुझे पता चला कि मात्र 4 लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, आपके पास पड़ा हुआ है, ओके ठीक है, सबमिट नहीं करें, ठीक है, सबमिट किए हुए मेरे पास है। I'll distribute tomorrow, and just can we discuss those questions, answers, right? That would be fruitful, and then we will discuss federalism day after tomorrow. ठीक है? मैं सोच रहा था कि 2 घंटे का टाइम मुझे मिल जाता मॉर्निंग में, तो मैं आराम से पढ़ाता, कुछ बातें करते हुए। 1 घंटे चाहे कि ले कैसे ले, ऐसे नहीं होता है, राइट? मैन इज बोर्न बट ही इज इन चेन एवरीवेयर। रूसो का एक रूसो एक स्कॉलर था, उसका कहानी उसका कहना था कि मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन, राइट? तो आपकी अच्छी बात है कि और वो खत्म शुरू हो गई है, क्या नाम है, एथिक्स शुरू हो गई, तो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इधर मैं भी धीरे धीरे कोशिश करता हूँ ये भी खत्म करूं, राइट? सो वी कैन कंप्लीट योर कोर्स। सर पर्पस है कि कंप्लीट करना है। यस, बोलो प्रियांश। सर, जैसे आपने बताया वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो सीबीआई ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया, तो डज द पुलिस हैव दिस पावर टू आर्बिट्रेरली अरेस्ट एनीवन? देखो, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का मामला है ना, यही तो कन्फ्रंटेशन है। नाउ एक चीज और बता दे रहा हूं, जब बात ये थी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उनको एक एडवाइजर रखना था, तो उन्होंने एक आईएएस को अपॉइंट कर दिया। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया उसको। The central government has terminated it. So look at the both and the center and state come into the confrontation. तो भाई तुम ये करोगे तो हम ब्लॉकेज लगा देंगे, जो भी हमारी पावर है उस हिसाब से। ओके प्रियांश? यस सर। जितना ऑफ कोर्स अगर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बाद में पढ़ाऊंगा, लेजिस्लेटिव ना, लुक एट, अब जब आप उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और बिगर पिक्चर समझ में आएगा। इन इंडियन फेडरलिज्म स्टेट हैज वेरी लेस पावर, राइट? और अगर मान लो प्रेसिडेंट रूल यूज हो जाता है तो स्टेट के पास कुछ पावर ही नहीं है। सो विद दिस आई विल स्टॉप टुडे एंड सी यू टुमारो।